हेलो स्टूडेंट्स। अभी आप करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. इट इज़ यूजुअल फॉर क्लब्स एंड सोसाइटी to record receipt and payments of money in cash book at the end of society financial year. The entries in the cash book are summarized and the summaries entered in a receipt and payment accounts and analysis from the cash book facilitates its preparation. The receipt and payment account discloses the cash and bank balances in the beginning of the year. Total receipt and payment account payments of the cash during the year and the balance of the cash and cash in hand at the end of the year. This receipt to consider both capital and revenue items. It does not take into the accrued incomes and expenses. On the other hand, it may include incomes and expenses relating to the other years. Receipt paid during the current year due to the reason it will not disclose the surplus or deficit for the year. Receipt and payment account is a real account and is deal with cash transactions. तो बेटा आप बोल सकते हो कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स है ये कैश बुक का ही दूसरा पार्ट है. ठीक है. रिसिप्ट मीन्स जो भी कैश आपके पास आया वो रिसिप्ट साइड में आ जाएगा और पेमेंट्स मीन्स आपके जो भी पेमेंट्स की हैं. तो कैश बुक में तो ऐसे ही होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है. जो भी कैश आ रहा होता है वो हम कैश अकाउंट के डेबिट में डालते हैं, जो भी कैश जा रहा होता है वो क्रेडिट में डालते हैं. ऐसे ही इसमें भी आपने सिर्फ पर्टिकुलर्स की जगह रिसिप्ट कर देना है और दूसरे वाली क्रेडिट साइड वाला जो पर्टिकुलर्स है उसकी जगह आपने पेमेंट्स कर देना है और कुछ भी नहीं है. एक तो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा आपके पास, फिर आपका कैरी डाउन आ जाएगा, जो भी आपके रिसिप्ट्स आए होंगे वो ऐड हो जाएंगे और जो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट मतलब कि क्रेडिट साइड में जो होता है वैसे ही लिखेंगे तो उसमें आपका वो माइनस हो जाएगा और कैरी डाउन हो जाएगा. ठीक है बच्चों. तो फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट. नेचर ऑफ अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक. All receipts are shown on the debit side and all payments are shown on the credit side. ठीक है. अभी आपको ये बताया मैंने. मर्जिंग ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन. इसमें कैश और बैंक मर्ज करके इकट्ठा करके करना है. इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड ends with closing balance of cash and bank. It means cash and bank terms are merged into one column. The receipt in cash and by checks are entered on the debit side in the column and payments in the cash as well as checks are entered in the one column of the credit side. Contracts between the cash and banks are eliminated. वो इकट्ठी कर दी गई हैं. ठीक है. Not a part of double entry system. It is not a part of the double entry system of bookkeeping. It is just a summary of cash book and cash but cash book is part of double entry system. Revenue and capital items. It records both revenue and capital nature items. All on the receipt whether capital or revenue are debited and it and all the payments whether capital or revenue are credited to it. ठीक है. फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. यूजुअली इट बिगिंस विद ए डेबिट बैलेंस which represent cash in hand and cash at bank. However, in cash of bank overdraft, this accounts may show a credit balance. ठीक है. और उसके बाद कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इट रिकॉर्ड्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड and paid during the year. Expenses outstanding and income due what not received are not recorded it. ठीक है. जो नहीं रिसीव्ड हुआ वो नहीं इसमें डालेंगे. पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन. दिस अकाउंट रिकॉर्डेड द कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर whether related to previous year, current year or next year. Surplus or deficit. It does not disclose any surplus or deficit. No adjustments. No adjustments are made in this account. इसमें कोई adjustment नहीं होगी. ठीक है जी. फिर उसके बाद आपका advantages of receipt and payments accounts. It is possible to know at a glance receipt and payments during a period under different heads. इसमें possible है आपका कि आप उसका रिसिप्ट और पेमेंट देख सकते हैं. एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैन बी कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज ए रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट. इट इज इन फैक्ट द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. फिर उसके बाद है लिमिटेशंस. एडवांटेजेस थे जो आपके फ़ायदे थे और उसके बाद आपके लिमिटेशंस हैं जो आपके डिसएडवांटेजेस, चाहे इसको हम शॉर्ट कमिंग्स भी बोलते हैं. द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर.
तो इट इज़ prepared on the cash basis of accounting. It does not record non-cash expenses or incomes, depreciation, outstanding expenses and accrued incomes. तो बोल रहा है कि ये वाली सारी चीज़ें हम नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये limitations है यहाँ पे. It records not only the expenses and income of the current year but also the past and future expenses and incomes received and paid during the current year are also recorded in it. ठीक है, इसमें मतलब प्रीवियस ईयर का इनकम वगैरह जो एक्सपेंसेस भी ले लेते हैं हम. ठीक है जी. It records both the revenue and capital receipts and payment in a particular year. It does not show any surplus. It is not a part of the double entry system of bookkeeping. The position is not done to the respective ledger accounts from this account. Balance sheet can not be prepared from this account only. ठीक है, तो बेटा ये अब आपने करना है अच्छी तरीके से.